अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम देखें, हमारी बॉडी में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, यानी कि ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं, कंट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रैक्शन ऑफ दिस आर्म और लिफ्टिंग ऑफ दिस आर्म। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम वॉलंटरी मूवमेंट कहेंगे। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रैक्ट, रिलैक्स या मूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट बीट, तो इसको हम कंट्रैक्ट या रिलैक्स अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम देखेंगे, ये भी एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है? रिफ्लेक्स एक्शन may be defined as it is a sudden spontaneous mechanical response to a stimulus without the will of an organism। यानी कि it is the sudden spontaneous automatic involuntary, ये सब इसमें आते हैं। it is sudden, अचानक होता है, spontaneous, involuntary and mechanical response to a stimulus without the will of an organism. It is called as reflex action. This reflex action was first discovered by Marshall Hall in 1833। तो मार्शल हॉल ने इसको पहले डिस्कवर किया। तो इट इज, हम कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ ब्रेन और विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, इसलिए हम इन रिफ्लेक्स एक्शंस को यूजुअली स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, because most of the reflex actions are controlled by spinal cord, so they are called as spinal reflexes. Now for example, एक example लेंगे हम, when we touch a hot object or when we put our hand by accidentally on a needle, we withdraw our hand very quickly. This is the example of this reflex action. Now what happens here? When we touch or we get pricked by the needle accidentally without our knowing, तो उस वक्त क्या होता है, हम अपना हाथ अचानक और जल्दी एकदम से अपना हाथ जो है वो पीछे लेते हैं। This is the reflex action. This is automatic, this is involuntary, mechanical response होता है, तो इसको हम वापस लेते हैं। That's this withdrawing of hand. This all consists of the reflex action. There are many other examples like a movement of the diaphragm during respiration, sneezing, coughing, gut peristalsis, etc. Now, इस रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअली क्या होता है? जब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, when a receptor in our body receives the stimulus, यानी कि अगर हमने कभी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, now heat is here the stimulus and our skin is the receptor। तो यहां पर क्या होता है, पहले जो रिसेप्टर होता है, receptor or we can say receptor organ, it receives the stimulus, it receives the stimulus। यहां पर stimulus क्या है? heat। now when the receptor हम यहां पर लेंगे skin। now when the receptor organ receives the stimulus, it will trigger a nerve impulse in the sensory neuron, and that will be passed through sensory neuron। तो
इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है, दिस nerve impulse will pass through that sensory neuron and it will reach the spinal cord. तो ये spinal cord तक पहुंचेगा। Now what will happen? Here spinal cord acts as the modulator. What will it do? It will convert or transform this sensory nerve impulse into motor nerve impulse. That sensory nerve impulse that was triggered by the receptor in the sensory neuron, and sensory neuron takes this sensory nerve impulse to the spinal cord. Spinal cord acts as the modulator and it converts, it transforms this sensory nerve impulse into motor nerve impulse. When motor nerve impulse will be generated in the motor neuron, this motor neuron will carry this motor nerve impulse to the effector organ. It will take it to the effector organ. This is motor neuron. यानी कि इस मोटर नर्व इम्पल्स को फिर मोटर न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट करेगा कहां तक? इफेक्टर ऑर्गन तक। तो यहां पर हमने जो सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर लिया था स्किन, तो यहां पर हम लेंगे मसल ऑफ द आर्म, इसको हम इफेक्टर ऑर्गन लेंगे। तो इस तरह से जब यहां पर होगा तो दिस इफेक्टर ऑर्गन और दिस मसल विल कंट्रैक्ट। तो इससे क्या होगा? इससे विड्रॉल ऑफ हैंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, here skin is the receptor organ and the heat of that palate, it acts as the stimulus. Now when hand touches that object, it withdraws its hand, or we withdraw our hand very quickly. Now what happens first? Here sensory this organ, it receives this stimulus, it initiates the sensory nerve impulse, and that sensory nerve impulse is carried by the sensory neuron to the spinal cord. Now here this message is not passed to the brain. This spinal cord acts as the modulator and it transforms this sensory nerve impulse into motor nerve impulse, which is carried by the motor neuron to the effector organ. When it will reach the effector organ, it will make it contract this muscle. When this muscle will contract, it will withdraw it. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा जो हाथ है ये ऑटोमेटिकली withdraw हो जाएगा वहां से, because this will make it contracted this muscle. तो इस तरह से reflex action होती है. This was the mechanism of the reflex action, or what actually happens in the reflex action. तो अब यहाँ पर है ये जो पाथ है, यहां पर मसल कंट्रैक्शन हो गया। दिस पाथ जहां से ये नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो गई, दिस पाथवे थ्रू विच दिस नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। The pathway through which this nerve impulse transport, it's called as reflex arc, or we can say traveled by the nerve impulse during the reflex action is called as reflex arc. यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जहां जहां से ये नर्व इंपल्स जाती है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक और सवाल उठता है कि क्या ब्रेन का कोई यहां पर रोल होता है कि नहीं इस रिफ्लेक्स एक्शन में? जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं, मैसेज ब्रेन तक जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी हॉट पैलेट को टच करते हैं तो यहां पर एक तो हीट है और दूसरी पेन जो होते हैं वो भी स्टिमुलस एज एक्ट करती है, क्योंकि जो हीट है चलो वो हमने किया, दैट स्टिमुलस, बट दैट पेन, हाउ वी कैन फील द पेन? Because all the centers are in the brain, or the thinking centers are in the brain.
तो ये पेन हम कैसे महसूस कर सकते हैं? हाउ वी फील दिस पेन? इट मीन्स सम मैसेज also passes towards the brain. That's why here, because spinal cord have no thinking center, it has no thinking centers of pain or anything else. It means here we feel heat as well as the pain. This pain also acts as here stimulus. So we can say that there is these messages also pass to the brain. Now there are some reflexes which are only carried by the brain. Those reflexes, those reflex actions which are controlled by the brain, they are called as cerebral reflexes. For example, when someone flashes a light on our eyes during the night, what we will do? If someone will flash light on our eyes, we automatically at once close our eyes. That is the reflex action. But here the message goes to brain, and brain again acts as modulator and sends this nerve impulse to the effector organ, that is these eyelids, and it gets closer. Here this is only controlled by the brain, so these reflex actions are called as cerebral reflex actions or cerebral reflexes. Or seeing delicious food, our mouth gets watered. हमारे मुंह में पानी आता है जब हम डिलीशियस फूड को देखते हैं, तो उस वक्त इफेक्टर ऑर्गन होता है ग्लैंड, जो कि वहां से सलेवा सिक्रीट होता है. तो ये भी है दिस सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शंस अगर देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के. देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत फायदे भी है. हाउ इट enables our body, this reflex action enables our body to give the quick response to a stimulus. यानी कि हम जल्दी जल्दी एक स्टिमुलस जो होता है उसको हम रेस्पॉन्स देते हैं ताकि बॉडी को ज्यादा डैमेज ना हो. अगर हम उस हॉट प्लेट पे हाथ ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो हो सकता है हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचेगा, यदि हाथ जल जाएगा. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे ही वो वहां पर इसको वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको भेजता है और वहां पर ये कंट्रैक्ट करवाता है और वी कैन से रेस्पॉन्स करवाता है. इट मीन्स दिस रिफ्लेक्स एक्शन enables our body to give the quick responses to the stimulus, and in this way the damage or the loss to the body is minimized or decreased. Secondly, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये खुद इसको कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस को, तो इससे ब्रेन पे ओवरलोडिंग कम हो जाती है. इट रिड्यूसेस द ओवरलोड ऑफ द ब्रेन. एंड थर्ड, इट हैज द सर्वाइवल वैल्यू. नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शन एंड दिस रिफ्लेक्स एक्शन. जो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस. देखिए रिफ्लेक्स एक्शन तो आपने देखा, इट इज स्पॉन्टेनियस सडन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, मैकेनिकल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एंड विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. नाउ involuntary action is not also under the control of our will, but that muscular movements which are not under the control of our will, they are called as involuntary movements, but they are controlled by the brain. Here these reflex actions are controlled by the spinal cord. Secondly, these reflex actions occur in or we can say during emergency situations. Involuntary movements doesn't occur in the emergency situations. फॉर एग्जाम्पल हम अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हो, तो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीटिंग करता है, दैट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट, बट इट इज नॉट इमरजेंसी सिचुएशन. नाउ अगर हम चलते चलते कभी कोई नीडल हो या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो उस पर हम पैर रखेंगे तो वहां पर ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पर एकदम से हमारा पैर रुक जाता है. अगर वो पैर नहीं रुकेगा तो हमारी बॉडी को ज्यादा डैमेज होगा. दिस इज डिफरेंस बिटवीन द इनवॉलंटरी एक्शंस एंड द reflex actions. Now there is another question, what is difference between walking and reflex action? It is easy. Walking जो होता है that is under the control of our will, that is controlled by the brain, and reflex are controlled by spinal cord, that are not under the control of our will. Thirdly, we learn walking and it is we learn the walking, but this reflex action, this is inherited. Walking we can change walking.
we can run, we can jog, or we can walk slowly, but we cannot change this reflex action. This is difference between